Good morning, everyone. In today's lecture, we will discuss about life cycles in algae. So, firstly, life cycles in algae. What is life cycle? So, जो भी events होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में फ्रॉम बर्थ टू natural death, that may be morphological variations, that may be genetical variations or physiological variations, जो भी changes आते हैं they all comes under the term life cycle. So all the events which occur in the life cycle of an organism is known as its life cycle. So the growth and development of algae passes through a number of distinct morphological and cytological changes. So जो भी changes आते हैं they may be morphological, cytological changes algae के पूरे life span में in a definite manner. So this sequence of these changes, जो भी sequence of changes हैं उसको कहा जाता है life cycle और life history. So all the events which occur in the life of any organism is commonly known as life cycle or life history. इसमें क्या होते हैं? There are sequences of events from zygote of one generation to the zygote of next generation. So the zygote से start होता है and it produces it will gets mature into a living organism. उसके बाद ये produce करेगा gametes and they will produce another zygote. So in algae, हम algae की बात करेंगे. So algae में there are 5 distinct type of life cycles जो हम discuss करेंगे. Life cycles discuss करने से पहले there are some terms like haploid और diploid. So haploid और diploid जो term है it is related to the chromosomes in cell. So diplo means two, ploidy means unit. जब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम हैं they lie in pairs में lie करते हैं chromosomes and each chromosome has complete set of genetic information. So that condition is known as diploid and it is designated by 2n. While the gametes have single chromosomes, so the unpaired chromosome in the nucleus. So इस condition में there is no pairing, so that condition is known as haploid condition and it is designated by a single n. So a gametic chromosome number is haploid and others than gamete cells they all are diploid in case of humans, as we say. So in next slide we have one animation so that will make you clear about the difference between haploid and diploid. In somatic cells, chromosomes occur in pairs, and each chromosome contains a complete set of identical genetic information. Such chromosomes are said to be homologous. A set of chromosomes in the nucleus, consisting entirely of pairs of chromosomes, is described as diploid. One chromosome of a pair is frequently indicated by the letter N. Therefore, a diploid set of chromosomes, pairs of homologous chromosomes, is indicated by 2n. On the other hand, if the nucleus contains a set of unpaired chromosomes, this set is described as haploid. This is frequently indicated as 1n. A haploid number of chromosomes usually occurs in gametes, while a diploid number occurs in the remaining cells of the body, known as somatic cells. So let's start. So first जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ना है दैट इज़ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इस तरह की जो लाइफ साइकिल है इसमें जो एल्गी की प्लांट बॉडी है मोस्टली जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ हैप्लॉइड. सो मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज़ हैप्लॉइड. सो इसमें जैसे हम स्टार्ट करते हैं द मेन प्लांट बॉडी जो होती है एल्गी के केस में दैट इज़ गैमेटोफाइट. सो गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव क्रोमोसोम्स इन विच आर अनपेयर्ड. सो गैमेट्स में जैसे होते हैं वैसे ही इसमें अनपेयर्ड होते हैं chromosomes. So that's why this is called gametophyte. So this is the main plant body.
और जो गैमेटोफाइट है इसका काम होता है गैमेट्स प्रोड्यूस करना, सो इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स, और गैमेट जो प्रोड्यूस करेगा दे आर आल्सो हैप्लॉइड designated by this single N. Then there are two gametes which they will produce. One is male gamete, other is female gametes. They will fuse to form this diploid structure, which is known as zygote. So zygote is the only cell in the life cycle of algae which is diploid. So जो zygote है, that is the only cell which is diploid in the life cycle of this type of algae. और ये zygote है, it will undergo meiosis. Meiosis, as we know, this is the reductional division. So इसमें जो chromosome number है वो half हो जाएगा. So again it will form the zoospores which are haploid. और ये जो zoospores हैं they will germinate to form gametophyte. So this is the brief introduction of this haplontic life cycle. So this is the most common type of life cycle which occurs in algae. And this life cycle is diphasic. Why diphasic? Because there are two distinct phases. One is this haploid gametophytic phase, other is this diploid phase which is represented by this zygote only. And the prominent phase is haploid that I have already discussed. So this is also known as gametophytic phase. It is represented by this single n, small n. And the sporophytic phase is very short and it is represented by zygote only. Then zygote बनता कैसे है? By the fusion of gametes. So दो gametes fuse करेंगे they will form zygote. Then zygote is the only cell which represents the diploid phase of this life cycle of algae. और जो zygote है it will undergo immediately meiosis. Meiosis होगी, इसमें reductional division है, so chromosome number becomes half. So फिर से जो structures बनते हैं which are known as zoospores, they are haploid. And they get germinated to form haploid gametophytic generation again. So इस तरह से जो ये algae haplontic type of life cycle show करती है most of the algae. और जो gametophyte है that will produces male and female gametes by mitosis. So mitosis, because ये already haploid है तो इसमें meiosis नहीं हो सकती है. So that's why जो male और female gametes हैं वो produce होते हैं gametophyte से with the help of mitosis. So this is all about this haplontic type of life cycle. We can see here, suppose there is mature organ, उसका जो chromosome number है, chromosome की arrangement है that is haploid, means pairs में नहीं है. So जो mature organism it will produce gametes. So one is male gamete, other is female gamete. दोनों gametes fuse करेंगे. They will undergo fertilization to form zygote. Zygote is the diploid cell. और zygote जो बनता है, this is the only cell which is diploid. It will undergo meiosis, reductional division, to form haploid spores, and this spore will germinate to form a mature organism which is again haploid, and this is commonly known as gametophyte in case of algae. So this is all about haplontic life cycle. So this is most simple type of simple and primitive type of life cycles. It is found in some algae like Chlamydomonas, Eulothrix. Then we have next type of life cycle which is Diplontic life cycle. So Diplontic life cycle, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो मेन लाइफ साइकिल का फेज होगा that will be diploid phase, और जो haploid phase होगा that is represented by only gametes. So इस तरह का जो लाइफ साइकिल होगा which is exactly reverse of haplontic life cycle is known as Diplontic life cycle. We can see here, this is the main plant body which is sporophyte. जो haplontic के केस में था उसमें जो main plant body थी that was gametophyte, means haploid था, but इसमें जो main plant body है that is diploid, so it is known as sporophyte. It will undergo meiosis होगी sporophyte में, and it will produce his gametes. So जो gametes हैं they will fuse to form zygote, and zygote will develop again into the sporophyte. So this is the Diplontic life cycle, means most of the life cycle is diploid and only small phase is represented by haploid phase. So this is the type of life cycle which is just reversal, means reversal of this haplontic life cycle. बिल्कुल अपोजिट होगा ये haplontic life cycle के. This is again diphasic, but इसमें जो prominent phase है वो है sporophytic, not gametophytic. जो haploid gametophytic phase है that is represented by only gametes. So gametes represent करते हैं, और gametes are produced inside special structures which are known as
गैमेटेंजिया, दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ meiosis. meiosis के रिजल्ट से प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स, बिकॉज द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड. सो डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं, सो इट इज फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस विच इज meiosis. एंड जाइगोट डू नॉट अंडरगो meiosis. जाइगोट इसमें meiosis, जाइगोट में meiosis नहीं होती है, सो इट जर्मिनेट डायरेक्टली टू फॉर्म स्पोरोफाइट. Examples are sargassum, fucus, and codium. So these are some algae which shows diplontic life cycle. The next is Diplo-Haplontic life cycle. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो फेज होगा, डिप्लॉइड फेज भी प्रोमिनेंट होगा और हैप्लॉइड फेज भी प्रोमिनेंट होगा. सो इस तरह की जो लाइफ साइकिल है उसको कहा जाता है डिप्लो-हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसमें जो हैप्लॉइड फेज है और डिप्लॉइड फेज है, दे आर इक्वली प्रोमिनेंट, मीन्स बोथ द फेज आर प्रोमिनेंट. शॉर्ट कोई भी फेज नहीं होगा. एंड गैमेटोफाइट का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स जो कि फ्यूज होंगे टू फॉर्म जाइगोट, वाइल जो जाइगोट है दैट विल जर्मिनेट टू फॉर्म डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा और इसका काम है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. स्पोरोफाइट का काम है टू प्रोड्यूस स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स. स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. इट will undergo meiosis to form haploid spores. Then these haploid spores are also known as meiospores. Why meiospores? Because they are formed as a result of meiosis. So meiosis के result से बनते हैं ये spores. That's why these are known as meiospores. और ये germinate करेंगे to form gametophyte. In this type, sporophytic phase, that is 2, and diploid phase है ये, and it alternates. It is followed by the gametophytic phase, which is haploid phase. So we in this picture we can see here, this is the sporophyte. जो sporophyte है ये produce करेगा spores. तो it bears some special structures जिसके अंदर spores बनते हैं, उसको कहा जाता है sporangium. So sporangium is the structure जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. सो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बनेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस से जो क्रोमोसोम नंबर है दैट बिकम्स हाफ. सो जो स्पोर्स होंगे दे आर हैप्लॉइड रिप्रेजेंटेड बाय एन. ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म दिस गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट is as a result of this germination of spores, gametophyte produced is haploid, or gametophyte will produce gametes, that is male gamete and female gamete. जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, दे विल फ्यूज, दे शो फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर. दिस इज जाइगोट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n. सो दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ diploid phase, we can say. It will germinate or grow into this sporophyte. So this is the Diplo-Haplontic type of life cycle which occurs in some algae. Then on the basis of morphological characteristics of gametophytic and sporophytic plant, इसमें जो gametophytic plant है और जो sporophytic plant है उसको morphology के बेस पे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है isomorphic type of Diplo-Haplontic life cycle, second is heteromorphic type of Diplo-Haplontic life cycle. So in this picture we can see here, इसमें जो haploid phase है और diploid phase है. So इसमें जो haploid और diploid phase है, these both phases are morphologically similar. So we can see here, this is diploid sporophyte, we can see this picture, and this is haploid gametophyte. So ये जो दोनों structures हैं, sporophyte and gametophyte, these are structurally or morphologically similar. So इस तरह का जो Diplo-Haplontic life cycle है उसको कहा जाता है isomorphic type of life cycle. So isomorphic type, when both gametophytic and sporophytic plant bodies are morphologically similar but genetically वो different होंगी, because जो sporophyte है that is diploid और जो gametophyte है that is haploid. So this type of Diplo-Haplontic life cycle is known as isomorphic or homologous type of life cycle. So it is shown by some algae like Cladophora, Ulva and Dictyota. In this picture we can see here, this is the Ulva lactica. So it shows an example of isomorphic type of alternation of generation. We can see here, this is the diploid plant body. Diploid plant body का काम है to produce spores. So spores बनते हैं as a result of meiosis. So this is diploid structure. They will form haploid structure. Haploid structure which are spores. Spores will germinate
to form male thallus and female gametophyte. This is the male gametophyte, this is the female gametophyte. और ये जो gametophytes हैं, they will bear reproductive structure gametangias. So जो मेल गैमेटेंजिया होगा उसके अंदर बनेगा मेल गैमेट, और जो फीमेल गैमेटेंजिया होगा दैट विल फॉर्म फीमेल गैमेट. एंड दिस फीमेल गैमेट और मेल गैमेट विल फ्यूज हो जाएंगे दोनों गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगी, एंड दे विल प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज zygote. So this is the first cell of this sporophytic phase. Zygote is the first cell of sporophytic phase. Zygote will undergo mitosis, that is equational division. अब इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है रिड्यूस नहीं होगा, so it undergoes mitosis, equational division, and will grow to form this diploid structure again, that is sporophyte. इसके अलावा जो प्लांट्स हैं they can also show asexual reproduction, जो हमने पढ़ा है with the help of this fragmentation, or we can say by the production of some spores like zoospores. So this is asexual reproduction. So both the phases, that is haploid phase and diploid phase, are equally are of equal duration. So both the phases are prominent. So इस तरह का जो लाइफ साइकिल है जिसमें स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट है they are morphologically similar but genetically different. So इस तरह के लाइफ साइकिल को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. नेक्स्ट वी हैव हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. एज इट्स नेम इंडिकेट, इसमें जो गैमेटोफिटिक फेज है और जो स्पोरोफिटिक फेज है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट. वी कैन सी हियर दिस इज अ स्पोरोफाइट. जो स्पोरोफाइट है इसमें जो गैमेटोफाइट, दिस इज द गैमेटोफाइट. सो जो गैमेटोफाइट्स हैं, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज मेल गैमेटोफाइट, दीज आर structurally different from the sporophyte, but both the phases are prominent, that is haploid phase or diploid phase, both phases are prominent but they are morphologically dissimilar. So that's why this is commonly known as heteromorphic type. When gametophytic and sporophytic plant bodies differ morphologically as well as genetically, so इस तरह के हम लाइफ साइकिल को कहते हैं heteromorphic type. So genetically sporophytic plant body is macroscopic, it means it is large in size, and gametophytic plant body is comparatively smaller. So it occurs in case of some algae like Laminaria and Desmaricida. So in this picture we can see here this is the diploid plant body. It will produces sporangia. Sporangia are the structures जिसके अंदर spores बनेंगे, and it will undergo meiosis होगी इसमें, and it will produces haploid zoospores. जो haploid zoospores हैं they can show sexual dimorphism, means कुछ एक spores बनाएंगे female gametophyte, and कुछ एक जो spores हैं they will form male gametophyte. These both the gametophytes, जो male gametophyte है और female gametophyte है, they will produce gametes. gametophyte का काम है gametes produce करना, so they will produce gametes. So male gametophyte will produce sperm and female gametophyte will produce egg. These both will undergo fertilization, fusion हो जाएगा, and they will produce this diploid structure which is known as zygote, and this zygote represents the first cell of the sporophytic generation. Zygote will develop and it will grow to form this diploid structure, diploid plant body. So these both the structure, gametophytic as well as sporophytic plant bodies, are morphologically different. So that's why this is called heteromorphic type of life cycle. In few cases this process is vice versa, means it is opposite of this. For example, Cutleria and Urospora. So this is all about heteromorphic type of life cycle. Then next is diphasic HAPLO-BIONTIC life cycle. Diphasic HAPLO-BIONTIC life cycle. So इसमें दो haploid gametophytic plant bodies alternate करती है with sporophytic phase, means दो haploid phase होंगे that will alternate with one sporophytic phase of short duration, that is very small, that is of very small duration. We can see in this picture, इसमें जो main plant body है this is gametophyte. जो gametophyte है it will produce gametes fuse करेंगे to form zygote. So this is the first cell of sporophytic generation. So this is a single cell. This is the single cell which represents sporophytic generation.
अब जो जाइगोट है इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल प्रोड्यूस अनदर टाइप ऑफ स्पोर विच आर हैप्लॉइड। सो इसमें दूसरा फेज फिर से ये हैप्लॉइड फेज है। एंड जो कार्पोस्पोरोफाइट है it is a haploid phase, it will produce carpospores. These are again haploid, and these carpospores germinate to form gametophyte. So there are two haploid phases and single diploid phase, that is sporophytic phase. So इस तरह का लाइफ साइकिल जिसमें दो हैप्लॉइड फेज होते हैं और एक सिंगल डिप्लॉइड फेज होता है या स्पोरोफिटिक फेज होता है, उसको कहा जाता है डाईफेजिक हैप्लोबायोंटिक लाइफ साइकिल। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है फ्री लिविंग, दैट इज गैमेटोफाइट, मींस गैमेटोफाइट है वो, और इसका काम है गैमेट्स प्रोड्यूस करना। देन गैमेट्स फ्यूज करते हैं जाइगोट, देन दिस जाइगोट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जाइगोट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जैसे ही जाइगोट की मियोसिस होगी, इट विल प्रोड्यूस कार्पोस्पोरोफाइट, इट विल प्रोड्यूस कार्पोस्पोरोफाइट। और जो कार्पोस्पोरोफाइट है, कार्पोस्पोरोफाइट के जो टर्मिनल सेल्स हैं, दे विल प्रोड्यूस कार्पोस्पोर्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर नोन एज कार्पोस्पोरेंजिया। जो कार्पोस्पोरोफाइट है, इसके टर्मिनल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कार्पोस्पोरेंजिया, और कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं कार्पोस्पोर्स विच आर हैप्लॉइड। देन दीज कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट, ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे मेन जो प्लांट बॉडी है, दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। सो दिस टाइप ऑफ life cycle is shown by some primitive red algae such as Nemallion. In this picture we can see here, so this is the main filament. जो filament है ये main plant body है इसकी, it will produces some haploid cells. जो ये haploid cells हैं, they will form this carposporophyte. This is the gametophyte. This is the gametophytic phase. जो ये carposporophyte है, ये produce करेंगे कुछ spores, और ये जो स्पोर्स हैं दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म दिस कार्पोस्पोरेंजियम। कार्पोस्पोरेंजियम विल फॉर्म कार्पोस्पोर, और कार्पोस्पोर फिर से बनाएगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सो इन प्रीवियस पिक्चर दैट वाज द सिंपलेस्ट पिक्चर विच शोज दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज डाईफेजिक हैप्लोबायोंटिक लाइफ साइकिल। द नेक्स्ट इज ट्राइफेजिक हैप्लोबायोंटिक लाइफ साइकिल। Triphasic, this is triphasic. So in this picture there are three prominent haploid gametophytic plant bodies which alternates with the sporophytic phase of short duration. जैसे नाम से पता चल रहा है, triphasic means तीन phases होंगे haploid plant body के, which is followed by one shortest sporophytic phase. It is so that shortest phase of sporophyte is represented by this. It is similar to diphasic haplobiontic life cycle, except one additional haploid structure is formed which is known as Catrentia stage after haploid carposporophyte. इसमें एक additional structure बनता है जो पीछे हमने पढ़ा था, that is again haploid which is Catrentia stage. Catrentia stage बनती है, that is again haploid. So this is the additional haploid stage in addition to the previous one. So carpospore will germinate to produce haploid independent Catrentia stage. इसमें जो carpospore है that will, जो डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करेगा गैमेटोफाइट में, ये बनाएगा एक और स्टेज जिसका नाम है Catrentia stage, और वो जो Catrentia stage है which will give rise to independent main gametophytic plant body as lateral growth, for example Batrachosperma. So in this picture we can see here, this is there is sexual dimorphism. This is the female gametophyte, this is the male gametophyte. इन दोनों का काम है to produce gametes. So gametes produce करते हैं ये, this will produce gametes. So ये करेगा produce female gamete, और जो male gametophyte है that will produce male gamete spermatangium के अंदर, spermatium. and this is carpogonium जो कि female sex organ है, ये receive करेगा spores, कार्पोस्पोर्स जो कि प्रोड्यूस स्पर्मेशिया जो कि मेल गैमेट्स हैं, दे विल फ्यूज टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज़ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इट विल अंडरगो मियोसिस, इसके अंदर मियोसिस होगी, इट विल फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर विच इज़ कार्पोस्पोर।
ये जो कार्पोस्पोर है इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म द अनदर स्टेज विच इज अगेन हैप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज है वो, और उसको बोलते हैं कैट्रेंशिया स्टेज इन केस ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम। एंड दिस कैट्रेंशिया स्टेज विल प्रोड्यूस अनदर टाइप ऑफ स्पोर्स जो कि जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म दिस मेन प्लांट बॉडी, दैट इज मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। Next is Diplobiontic life cycle. So it is the most complex and advanced type of life cycle. It is again triphasic, 3 phases होंगे इसमें। So जैसे कि Diplobiontic, it means कि इसमें 2 जो phase होंगे they are diploid phases and single phase is haploid. Among 3 phases 2 will be diploid and 1 will be haploid. Then Diplontic life cycle is found in rhodophysian members except निमेलियनेल्स। ये रोडोफाइसियन मेंबर्स हैं रेड एल्गी, जो रेड एल्गी है उसको रोडोफाइसी बोलते हैं। सो पॉलीसाइफोनिया इज शोइंग सच हैप्लो डिप्लोबायोंटिक लाइफ साइकिल वी कैन से। सो इसमें क्या होता है, दिस इज द गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स, का काम है गैमेट्स प्रोड्यूस करना। गैमेट्स फ्यूज होंगे टू फॉर्म दिस डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस। इसमें मियोसिस नहीं होगी, इट विल ग्रो इनटू कार्पोस्पोरोफाइट। जो कार्पोस्पोरोफाइट इट इज अगेन डिप्लॉइड, इट विल प्रोड्यूसेस स्पोर। इसमें मियोसिस नहीं होगी, इट विल प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड स्पोर विच आर नोन एज कार्पोस्पोर्स। दीज आर डिप्लॉइड स्पोर्स। सो ये जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म अनदर टाइप ऑफ प्लांट बॉडी विच इज नोन एज टेट्रास्पोरोफाइट। और जो टेट्रास्पोरोफाइट है इट इज अगेन डिप्लॉइड। देन इस दिस टेट्रास्पोरोफाइट विल अंडरगो मियोसिस and the chromosome number becomes half, so it will produce haploid spores. So जो tetraspores हैं they are haploid in nature, they will germinate to form the gametophyte. So इसमें 2 जो prominent phases हैं, these are diploid, this phase and this phase. So these both phases are diploid phases and this single phase is haploid. So that's why this is called diplobiontic life cycle. So इसमें 3 तरह की जो plant bodies बनती है। First is carposporophyte. This is carposporophyte which is diploid, then gametophyte haploid है and tetrasporophyte which is again diploid. So 2 इसमें diploid phases हैं and 1 is haploid. जो diploid zygote है ये develop करेगा mitotically to form carposporophyte. So zygote develop into after fertilization, जब fertilization हो जाएगी तो उसके बाद जो जाइगोट है वो डेवलप करेगा टू फॉर्म दिस कार्पोस्पोरोफाइट। दिस इज कार्पोस्पोरोफाइट एंड दिस कार्पोस्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस द डिप्लॉइड स्पोर्स विच आर नोन एज कार्पोस्पोर्स। डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं हुआ, सो इसलिए ये प्रोड्यूस करता है कार्पोस्पोर्स। और ये जो कार्पोस्पोर्स हैं दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म अनदर प्लांट बॉडी विच इज टेट्रास्पोरोफाइट, उसको कहा जाता है टेट्रास्पोरोफाइट। दिस इज टेट्रास्पोरोफाइट एंड इट विल दिस स्ट्रक्चर जो टेट्रास्पोरोफाइट है इसमें बनेंगे स्पेशल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजियम, एंड दे विल प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर टेट्रास्पोर्स। और इसमें होती है मियोसिस। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है दैट बिकम्स हाफ। सो टेट्रास्पोर्स आर हैप्लॉइड, सो दीज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये जो टेट्रास्पोर्स हैं दे विल germinate to form gametophyte. So tetraspore will germinate into haploid gametophytic plant body and produces haploid gametes. और ये जो gametes हैं वो fuse होंगे बाद में and they will form zygote. So इस तरह का जो life cycle है जिसमें कि 2 phases, prominent phases जो हैं they are diploid and a single phase that is haploid. So diploid phases are carposporophyte and tetrasporophyte while the gametophytic phase is gametophyte. So it is also known as Diplo-Haplontic. This is also known as Diplo-Haplontic type of life cycle. It is again of 2 type, isomorphic, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। अगर morphologically similarities होंगी दोनों generations में so isomorphic है, अगर different होगा तो heteromorphic. So further 2 तरह का है ये। Then we have free living. First is free living independent generations are morphologically similar. अगर free living जो generations हैं वो morphologically similar होंगी तो उसको हम isomorphic type बोलेंगे। For example polycyphonia. Heteromorphic में अगर जो दोनों free living generations हैं they are different from one another,
when two free living generations are morphologically dissimilar. So this is known as heteromorphic or heterologous type of life cycle. It is shown by order Nemalio-Nails. So this is all about today's lecture. Thank you. Have a great day.